Hello students, welcome back to Physics Corner. In this lesson, we are going to discuss some more examples of de Broglie's concept. Okay? तो जो भी de Broglie का पिछले वीडियोस थे उनमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। तो इस वीडियो से हम एग्जांपल्स ऑफ de Broglie's कॉन्सेप्ट यानी कि जो भी हमने de Broglie's के कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके कुछ एग्जांपल्स हम लगाने वाले थे। ठीक है? तो देखिए पहला सवाल, consider a free particle. Consider a free particle. Now what is free particle? Okay, so देखिए, consider this pen. Okay, this pen is moving in the region. Okay, having some kinetic energy, and this pen is free to move in this region. That's why this pen is called as a free particle. तो देखिए, इस पेन को जो भी टोटल एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी. Or if the particle is moving, the potential energy zero. Okay, for this potential energy zero, and as you know that total energy is nothing but kinetic energy plus potential energy, but potential energy is zero. That's why the total energy for this particle is nothing but the kinetic energy. Okay, free particle के लिए total, what is the total energy? Kinetic energy. Okay, up to this no problem. In a region with a total energy E having a de Broglie's wavelength lambda. Okay, तो देखिए फ्री पार्टिकल है, उसके लिए टोटल एनर्जी बन गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जीरो. तो उसके लिए de Broglie's wavelength क्या है? लैम्डा. अब देखिए, अब ये जो फ्री पार्टिकल है ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन फॉर wavelength for the non relativistic particle, that is lambda equals to h upon under root of 2 times m into E, where E is kinetic energy, where this E is nothing but what? Kinetic energy. Now see, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर को कैसे फॉर्मुलेट करना है पहले ये सीख लीजिए. ओके, अप टू दिस नो प्रॉब्लम. नाउ सी, find its de Broglie's wavelength when it enters into a region in which potential energy is V. अब देखिए यही पार्टिकल अब एक अलग रीजन में एंटर किया तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? V. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई? V. Therefore total energy is nothing but what? Kinetic energy plus potential energy. Now from here, therefore kinetic energy equals to total energy minus potential energy. Total energy minus potential energy, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बन गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल, बिकॉज हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड हियर द पोटेंशियल एनर्जी दे हैव गिवन, दैट इज V. नाउ इन दिस रीजन you have to calculate what is the de Broglie's wavelength. देखिए यहाँ पे हमने लैम्डा लिया था, यहाँ पे हम लैम्डा प्राइम लेंगे. एनी प्रॉब्लम? नो. अब देखिए लैम्डा प्राइम इक्वल्स टू h upon under root of 2 times m into E, and here E is nothing but what? Potential energy. Sorry, E is nothing but what? Kinetic energy. Now we know the kinetic energy for this region. Put here. Therefore lambda prime equals to h upon under root of 2m E minus V. E minus V. Okay. Up to this, no problem. Now see what I am doing. Lambda prime equals to h upon under root of 2 times m into, अब E को बाहर निकाल दीजिए. What remains? 1 minus V by E. 1 minus V by E. Now see, lambda prime equals to h upon under root of 2me into 1 minus V by E. But now in terms of this you can write lambda, you can write lambda. Therefore lambda prime equals to lambda into 1 upon root of 1 minus V by E. This is the de Broglie's wavelength in this another region where the potential energy is V, not 0. Okay,
इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए और एक क्वेश्चन देखेंगे हम। लुक एट टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, फाइंड द de Broglie's wavelength of an electron in hydrogen atom। सवाल बढ़िया है। क्या पूछा है, हाइड्रोजन एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन है जो मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके लिए उन्होंने पूछा है de Broglie's wavelength। तो देखिए अब इसको इलेक्ट्रॉन को अराउंड न्यूक्लियस मोशन परफॉर्म करने कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दैट इज द क्वांटाइजेशन रूल्स to electron, that is those electrons are allowed to perform the motion around the nucleus which satisfy the quantization rule of angular momentum. Now according to the Bohr's model of hydrogen atom, we told that MVR, that is the angular momentum for this electron, should be equals to nh times upon 2 pi. Okay. If electron has to move around this nucleus, he has to follow this quantization rule. That is, this angular momentum of an electron should be equals to nh times upon 2 pi, where n is a states of, okay, n equals to 1, 2, 3 like that. Now they are asking to find us a de Broglie's wavelength, and what is the formula for that? Lambda equals to h by p. Yes, after this no problem. Now in place of p you can write momentum, mass into velocity. Yeah, no problem. Mass into velocity. Mass. From this equation 1 you can take mv and these are here. Therefore mv equals to nh upon 2 pi r. Any problem? No. Now put this mv here. Therefore h equals to nh upon 2 pi. Therefore, now rearranging these terms, we will get this 2 pi in the numerator. Therefore, 2 pi r into h upon nh. H get cancel. Therefore, lambda equals to 2 pi r by n. This is the de Broglie's wavelength of electron in hydrogen atom. Now, अब देखिए इस पे यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है, इन विच स्टेट, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, ओके, इफ दे आर आस्किंग इन द फर्स्ट स्टेट देन पुट n इक्वल्स टू, इफ दे आर आस्किंग इन द सेकंड स्टेट लाइक दैट, ओके। सो दिस इज द de Broglie's wavelength of an electron if it is in a hydrogen. Now see the third one. Let us discuss the third example. See what is the example is telling you. Find the de Broglie's wavelength of an electron in an infinite potential wall of width. de Broglie wavelength find out करना है। अब given क्या दिया है कि infinite potential wall है जिसकी लेंथ कितनी है L। चलिए हम ड्रॉ करेंगे। This is 0 to L. This is the length of that wall and having the infinite potential. Having the infinite potential. अब देखिए ये हो गया 1D box. What is this? 1D box. And you should know the generalized wavelength for this 1D box. What is sin n equals to under root of 2 pi L sin of n times power x by I. Okay, this is the wavelength for this 1D box. अब देखिए ये साइन, अब ये जो n है ना ये है स्टेट्स, ओके, एंड यहाँ से होता है ग्राउंड स्टेट से 1D बॉक्स से स्टेट शुरू होता है, तो बताए। अब देखिए
ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम a कह सकते, नो प्रॉब्लम. साइन ऑफ k, ओके, वेयर k equals to n times pi x by n. K equals to n times pi x by z. Okay, now see, put this equation. You know the relation of k and lambda, that is k equals to 2 pi by lambda. Now in terms of this k, you can write 2 pi by lambda, therefore equation 1 implies 2 pi by lambda equal n pi x by n. Just rearrange reciprocal, L upon n pi x. What do you want? De Broglie's wavelength, that is lambda. For lambda equals to 2 pi L upon n pi x. Pi get cancel. What remains? Lambda equals to 2L upon x. This is the de Broglie wavelength if a particle in an infinite potential wall of width L. Okay. Now see here, n is a state, and for the body works from the ground state, that is n equals to 1, this is the ground state, and the n equals to 2, this is the first excited state. Okay, and क्यों ऐसा भी पूछ सकते हैं, find this de Broglie wavelength for this infinite potential wall for first excited, for ground state. Okay, so in terms of n, you can put this. इतना सब simple questions है, Dungri questions, anybody can solve it. Now see the fourth one. Fourth question. Find the de Broglie's wavelength for a neutral particle and neutral gas. De Broglie's wavelength for a neutral particle and neutral gas. तो देखिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो लिया था. ये जब चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देखिए केस 1 केस 2 पढ़ा था, तो केस 2 में न्यूट्रल गैस और न्यूट्रल पार्टिकल थे और केस 1 में चार्ज पार्टिकल्स थे. तो उनके लिए हमने स्पेशल फॉर्मूलेस डिफाइन किए थे. तो देखिए आप, न्यूट्रल पार्टिकल, ओके, अब ये जो न्यूट्रल पार्टिकल और न्यूट्रल गैस है, ये है नॉन रिलेटिविस्टिक केस. तो आपको पता रहना चाहिए कि नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 टाइम्स 2me, where E is a kinetic energy. Up to this, no problem. Now see, for a neutral particle, kinetic energy is nothing but 3/2 times kBT, where kB is a Boltzmann constant and T is the temperature. Just to put this kinetic energy in this equation and get your solution. Lambda equals to h upon √2 times m into E, 3/2 times kBT. To get cancelled, therefore lambda equals to h upon √3m kBT. This is the general wavelength for a neutral particle. Okay, अगर आपको दिया है टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर यहाँ पे आप कर सकते हो, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 3 into m. अगर पार्टिकल दिया उसका मास भी है, h is nothing but the Planck's constant. Okay, easily you can find. Now sorry, for the neutral gas, I have already told you this is for the neutral particle, and for the neutral gas, kinetic energy is just a kBT. Just kBT. Now put this kinetic energy here. Therefore, lambda equals to h upon √2m into, in place of kinetic energy, you have to write kBT. This is the generalized de Broglie wavelength for a neutral gas. Okay, if they have given temperature, then you can solve it. तो इतने सिंपल क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स ऑफ de Broglie's कॉन्सेप्ट. ओके, देखिए सभी डोगरी क्वेश्चंस थे, पहले कह चुका हूं मैं, इतना डिफिकल्ट कुछ था ही नहीं ना.
सब फॉर्मुलेशन करके दिया था पहले आपको, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल।